Hello students, now we'll do question number 5 of BECS-184 Data Analysis, December paper. Question is, explain the difference between single bar diagram and histogram. As the name suggests, that single bar diagram consists of bars, single bars separated by a distance, okay, separated by a gap, uniform gap, whereas in histogram we don't have gaps. We have bars but we don't have gaps between them. Okay, so we'll discuss. Okay, and then the second part is construct a histogram from the given data. Pretty simple. Let's get started. So let us try to know the differences between single bar graph and histogram. First one, data type. Single bar diagram is used for discrete data and it is used for continuous data. And discrete and continuous, what is the difference between discrete and continuous? Discrete means when we have random data like 3, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 1000 and all. When we have continuous data, that means class interval forms like 0 to 10, there are 5 kids, 10 to 12, 10 to 20 years of age, there are 10 kids, and so on. When you have something like this class interval, you are talking about continuous data. When you are talking about random numbers, you are talking about discrete data. Okay, got it? Okay, next thing is bars. Bars are separated by gaps, as I told you. In single bar diagram, bars are separated by gaps, whereas in histogram, bars are not separated by gaps. They don't have gaps at all. They are adjacent to each other. X-axis, we have the categories, but in this case, we have class intervals on the x-axis. Width of bars, single bar diagram में क्या होता है? Equal but arbitrary. Equal but आर्बिट्रेरी. विड्थ रिप्रेजेंट्स क्लास इंटरवल. इसका मतलब ये होता है कि आप इसे बारग्राम में बना रहा हूँ सिंगल बार डायग्राम, तो मैं इसकी जो विड्थ ऐसे भी रख सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें पतले पतले बार्स भी बना सकता हूँ. बट यहाँ पे जो होता है हिस्टोग्राम में विड्थ यूनिफॉर्म होनी पड़ेगी. बताइए क्यों? बिकॉज क्लास इंटरवल फिक्स्ड है ना. 0 से 10 है तो विड्थ 0 से 10 के बीच में, मतलब 10 होगी. 10 to 20, 10, 20 to 30 एंड सो ऑन. यहाँ पे विड्थ कैसे भी कर सकते हो आप, बट एक बार डिसाइड कर लिया आपने तो सब में सेम रखनी पड़ेगी. और यहाँ पे विड्थ रिप्रेजेंट्स द क्लास इंटरवल. बेसिकली यहाँ पे विड्थ डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग. हेयर विड्थ रिप्रेजेंट्स द क्लास इंटरवल. ओके, next, area of bar, obviously it is not significant. Only the height matters. Only the height matters. In this case, only the height matters. Okay, only the height matters. Whereas in this case, area is important, and area of the bar is proportional to frequency. Okay, purpose to compare distinct categories, and here we show frequency distribution of continuous variable. Pretty simple. यहाँ पे डिस्टिंक्ट, एज आई टोल्ड यू डिफरेंट थिंग्स की अलग अलग हाइट्स के बारे में बताना है. यहाँ पे क्या है, प्रॉपर एक कंटिन्यूस वेरिएबल होगा और उसकी इन ऑल दोज क्लास इंटरवल्स क्या क्या फ्रीक्वेंसी है वो रिप्रेजेंट करनी होती है. एग्जाम्पल, सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी विल यूज सिंगल बार डायग्राम, वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स और टेस्ट स्कोर्स वी नीड, बिकॉज वी नीड कंटिन्यूस डेटा, एंड दैट इज वाई वी नीड हिस्टोग्राम. अब मुझे बताइए हाइट में कंटिन्यूस डेटा क्यों है? बिकॉज किसी की हाइट 4 से 5 के बीच में हो सकती है, किसी की 5 6 के बीच में हो सकती है, एंड सो ऑन. ओके, सो नाउ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम. नाउ we will construct a histogram based on this data. Okay, let's get started to histogram. Class interval, they represent the score. So 10 to 20, how many students have scored between 10 to 20? There are around 15 students. We can say it is number of students. Okay, now how many students have scored between 20 to 30? 30, and so on. So the thing is, we have to draw a histogram. Okay, so how do we draw a histogram? Pretty simple. First of all, we'll take one y-axis, okay, then we'll have one x-axis. Yes or no? As we know that x-axis पे हमें क्या लेना है और y-axis पे हमें क्या लेना है, ठीक है. सो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल होगा, ठीक है. यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल कैसे, 10 से है, तो इसको हम ऐसे शुरू कर सकते हैं किंग से. सो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60, and this y-axis represents the frequency. Okay, इसमें गैप कितने का ले, मैक्सिमम कितना आ रहा है 50 और मिनिमम 15, तो 10 का ले सकते हैं. 10, okay, 20, 30, 40 and 50. Yes or no? Now between 10 to 20, how many students are there? 15. 15 is somewhere here, so this is 15. Now between 20 to 30, there are 30 kids. Okay, 30 is here. Nice. So 30 is here. Now between 30 to 40, 50 kids. Good.
50 here. Okay, now 40 to 50, 35. Fair enough. Okay, now 50 to 60, 20 only. One more thing, we have to define the scale also. Scale हमने x एक्सिस पे क्या स्केल लिया है? कोई बता सकता है हमने x एक्सिस पे स्केल क्या लिया? हमने लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, है ना? 1 यूनिट क्या लिया हमने? 10 मार्क्स. ऐसे y एक्सिस पे भी तो हमने स्केल लिया है. क्या लिया है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. सो स्केल डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और फॉर अ बेटर रिप्रेजेंटेशन आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं 15, 30, 50, 35 एंड 20. दिस इज हाउ यू मेक अ हिस्टोग्राम. ओके, एंड दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस दैट यू कैन स्टडी. ओके.